नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज हमर ए जो सेशन रे आमे माने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऊपर क्वेश्चन गुडा सॉल्व करबा जोटा कि हमर ओटे सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन चली छी। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन भितरे आज हमर आ गोटे सेशन जोटा रे कि हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक ऊपर 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करबा। एई 50 टा क्वेश्चन रु तम मानकर निहाती गोटे ना गोटे क्वेश्चन गोटे दीटा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करि परिबा। ता संगे आम नॉट ओनली आम क्वेश्चन डिस्कशन करबा तार एनालिसिस मध्ये करबा आउ कोन कोन क्वेश्चन आसी परिबो सेटा को मध्ये डिस्कशन करबा। ता निहाती ए जो वीडियोडा रहइबा तुम मानक पई बोली हेल्पफुल रहइबा। तो सेति पई बोली समस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार एक्टिवली आंसर करबा एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ द सेशन। ठीक तो क्लास स्टार्ट करबा और देरी करबानी क्लास स्टार्ट कर देबा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एवरीवन बिफोर यू कोन हेछि एटा देखिलो द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन किए एडवर्ड जेनर जॉन स्नो रॉबर्ट कॉच लुइस पास्चर किए हम यस फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी को हमर जॉन स्नो होचंदी फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है ना जे की who was well known for tracing the source of cholera outbreak in Soho city of London को year रे देछंती 1854 है ना 1854 रे देछंती। तो ये है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ना ऑप्शन नंबर 2 डन। ठीक अन्वेषा यस नेक्स्ट द Alma Ata Declaration on the Primary Healthcare was adopted in the year को year रे हमर एडा अडॉप्ट हेथिला कोडी हेथिला एडा Alma Ata रे हेथिला ठीक अछि यस को year रे हेथिला it is 1978 in the month of September 1978 रे एटा next question number 3 WHO defined health as a state of complete physical mental and social well-being in the year को year रे WHO हमर हेल्थ रो डेफिनेशन दा देथिला को year रे WHO हेल्थ रो डेफिनेशन देथिला आ हेल्थ रो डेफिनेशन को से कहिथिला जे हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग को year रे देचंती ना 1948 करेक्ट लिप्सा यस 1948 रे आ एटा केते बळे हेतिला इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड हेतिला 1946 रे 1946 रे हेल्ड हला परे तापर ऑफिशियली it came into force on April 7 1978 so 1978 कौन लिखते नहीं 1940 then yes चल the first point of contact between the community and the healthcare system in the India is the first point of contact between the community and the healthcare system in the India is कौन को जाउची कम्युनिटी और हेल्थकेयर सिस्टम संगे जे कनेक्ट करची से हले हमरा सब सेंटर देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जबा as per population norms in the plain areas one sub center is established for a population of मामे जोड़ा सब सेंटर हमर कम्युनिटी सेंटर और पब्लिक सहित जे हमर कनेक्ट करि रखुची केते एरिया रे बा केते हमर पॉपुलेशन जे रहिले पॉपुलेशन नॉर्म अनुसार केते एरिया रे हमर गोटे सब सेंटर रहिबा दरकार केते एरिया रे गोटे सब सेंटर रहिबा दरकार यस 5000 यस 5000 और 3000 को एरिया रे ट्राइबल हिली एरियाज रे हमर 3000 होचंदी अदरवाइज स्टैंडर्ड रे 5000 3000 होची हिली एरियाज ट्राइबल एरियाज से सब रीजन गुडा पई अन्वेषा और एटा हला हमर 5000 नेक्स्ट as per the population norm in the plain areas one primary healthcare center PHC covers a population of 5000 20000 30000 1,20,000 गोटे पॉपुलेशन प्लेन एरिया गोटे एंटायर पॉपुलेशन रे हमर कोन से कवर करछि 30000 कवर करछि हैला 30000 कवर करछि
आउ हिली एरियाज ट्राइबल एरियाज ପାଇଁ ବୋଲି एटा होची कोन 20,000 ठीक नेक्स्ट as per population norms in the plain area one community health center covers a population of community health center केते population cover करिवो yes yes community health center केते cover करिवो पूरा community को नेगिरि जते बेला हम health center देखुचे ताहाले it should be covering 1,20,000 of the population हला 1,20,000 of the population ठीक अछि आउ आउ 80,000 कहा पे बोली 80,000 होची हिली आउ ट्राइबल एरियाज पे हिली आउ ट्राइबल एरियाज हला यस नेक्स्ट आसो आशा ASHA stands for ASHA stands for direct question ना direct question कौन होगा ASHA stands for the accredited social health activist accredited social health activist ठीक है अन्वेषा very good मोनालिसा next under the national rural health mission one ASHA is selected for a rural population of 500 1000 2000 5000 गोटे आशा आशा अनुसार बा आशार जो हमर जो सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप ता अछि ता अनुसार हमर पॉपुलेशन कवरेज केते हेबा दरकार गोटे विलेज रे इट शुड बी अराउंड 1000 हैला इट शुड बी 1000 प्रियंका यस ठीक अछि एना हला ए नेक्स्ट the national rural health mission NRHM was launched in the year को year रे launch हेची NRHM को year रे launch हेची it is launched in the year yes 2000 2005 2010 2013 एरा हबो केते अप्रैल 12 2005 April 12 2005 yes the integrated child development services ICDS scheme was launched in the year yes 2005 integrated child development services scheme was launched in the year को year launch है ICDS it is launched in the year 1975 very good 1975 date ta kono को मास को डेट October 2 1975 गांधी जयंती दिन ठीक अछि अच्छा हो तो ICDS हमर October 2 1975 रे हमर ये लॉन्च हितला हला कोन 1974 1995 1974 के कोन लाइन हां पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछो मोनालिसा अच्छा 1975 ठीक अछि B 1995 75 हला October 2 1975 next which of the following is not one of the 6 services provided under ICDS कोडा हमर ICDS द्वारा प्रोवाइड करा जाइतिबा 6टा सर्विसेज अंडर रे जाउ नाही कोडा हमर जाउ नाही B कोडा B पूछो question number 12 it is family planning surgery हमर ए भीतर जाउनी बुझिलो family planning service ए भीतर जाउनी हमर जो 6टा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी ICDS कोन कोन 6 services provided by ICDS are first supplementary nutrition second preschool non-formal education third nutrition and
health education. Fourth, immunization. Fifth, health checkup. Sixth, referral services. Referral services. है ये सब हूँ छटा जाक सर्विसेस जोटा कि आईसीडीएस द्वारा प्रोवाइड करा जाउछ से भितर फैमिली प्लानिंग सर्जरी हमर से भितर काउंट करा जाउ ना व्यक्ति रेखा डी होबनी फैमिली प्लानिंग सर्जरी होबनी अच्छा नेक्स्ट द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर UIP केबे लॉन्च हेतिला 1985 रे लॉन्च हेतिला हला 1985 रे लॉन्च हेतिला इनिशियली पूर्वरु ए जो यूआईपी टा आगो हमरो लॉन्च हेतिला इन द नेम ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI हला EPI जोड़ा कि 1978 रे थिला हला फर्स्ट रे ए प्रोग्राम दा ए ना रे इंट्रोड्यूस हेतिला जोटा कि लेटर मॉडिफाई करके यूआईपी कले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जोटा कि 1985 रे पुणी औथरे रिलॉन्च करा हला पुणी औथरे रिलॉन्च करा नेक्स्ट आसा क्वेश्चन नंबर 14 द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर pulse polio immunization was launched in the year 1995 है ना 1995 रे लॉन्च करा हेतिला and it was launched with the objective of achieving 100% coverage and eradicating polio mycelitis polio 100% पोलियो को हमको इराडिकेट करिवार अछि से पर्पस रे से जिंसटा को एम करिकरी हमर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ना जारी होतिला नेक्स्ट अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल along with BCG and OPV 0 a newborn is also given diphtheria at birth hepatitis B birth dose MMR at birth TT at birth कोन दिया होची BCG और OPV संगे रे आ कोन दिया जाउची आ कोन भी दिया जाउची आ गोटे मते वैक्सीन दिया जाउची इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अनुसार हमर हेपाटाइटिस बी रो वैक्सीन दा मते दिया जाउची हेपाटाइटिस बी रो वैक्सीन मते दिया जाउची आ एटा केते बे दिया होची इट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड within 24 hours of birth. Birth or 24 hours भितर एटा को यूजुअली एडमिनिस्टर करा जाय हेपाटाइटिस बी यस देन for storage of the subcenter pH level the ideal cold chain temperature inside an ILR is ILR रो माने कोन ice lined refrigerator ठीक अछि तो एटा हमर टेम्परेचर ता कोन आइडियल टेम्परेचर होची 0 to 2 to 8 डिग्री सेल्सियस 2 to 8 डिग्री सेल्सियस बी प्रियंका सौदामिनी अन्वेषा बी ठीक अछि सुभाष चंद्रागिनी मोनालिसा ठीक अछि 17 which of the following vaccine is most sensitive to freezing OPV measles BCG hepatitis B कोडा very sensitive to freezing बहुत जल्दी फ्रीज हो जिवो को वैक्सीन दा फ्रीज हो जिवो रूपाली yes it is hepatitis B हला hepatitis B vaccine it is very sensitive to freezing ठीक कोडा कहउछो कि रे बीबी अच्छा एडा कहउछो
एटा हबो हेपेटाइटिस बी हला नेक्स्ट vitamin A prophylaxis under the national program is given to the children in the age group of birth to 6 months 9 months to 5 years 5 to 10 years 1 to 2 years only 18 yes दी ठीक अछि एटा कोन हबो एटा कोन हबो एटा हम विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस हमरो 5 9 मंथ्स टू 5 इयर्स जे दिया हुए 9 मंथ्स रे जते बडे देला बेलु को हला 1 लाख आयु रे दिया हबो तापर सब्सिक्वेंट डोजेस उडा को सब प्रति 6 मंथ्स रे दिया हुए आउ 6 मंथ्स रे देले हमरो 2 लाख आयु रे दिया हबो ठीक अछि until the age of 5 years until the age of 5 years तो टोटल से हमरो 9 डोजेस छुआडा हमरो 9 डोजेस पाई था 9 डोज पाई था ठीक अछि ये हमरो 9 मंथ टू 5 years नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना mainly aims to promoting जननी सुरक्षा योजना mainly से कोन एम होची कोन प्रमोट करेबो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी हवा मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन ना तो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी it is hepatitis B only it is hepatitis B only ठीक अछि मोस्ट फ्री सेंसिटिव रे हमर हेपेटाइटिस बी आसी जीवो आउ डीपीटी भी आसी जीवो ठीक अछि हां डीपीटी भी आसी जीवो सेटा स्टोर करा जाय ना अरे अन्वेषा सेटा स्टोर करा जाय ताले सेंसिटिव केमे दियाला मु कहूची कि से स्टोर फ्रीजिंग को सेंसिटिव माने फ्रीज करले से नष्ट होई जे फ्रीज करले से नष्ट होई जीवो सेटा होची हमर सेंसिटिविटी को बुझोची हैला ताको जदी -20 डिग्री रे से स्टोर करा होची बोले से सेंसिटिव थोड़ी छै से तो सेटा सुटेबल ना सुटेबली सेट रही परियो हैला हां हीट सेंसिटिव हैला ओपीवी करेक्ट ताको स्टोर करा जाय हमर कोल्ड टेंपरेचर ठीक ऐसा जननी सुरक्षा योजना होची हमर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैला इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर यस जननी सुरक्षा योजना हाँ ओपीवी फ्रिज रे रखा जाए फ्रिज रे रखा जाए त माने होची से सेंसिटिव थोड़ी सेंसिटिव एटा तो फ्रिज रे रखले नष्ट हो जाई थांता बुझि पारला ओपी सेरा हमर ओपीवी टा फ्रीज करा जाउची माने तो से कंडीशन स्टोर होची सेंसिटिव रा माने होची जो कंडीशन रे रही तो नष्ट हो जो हैला चलो एटा करलो कोन हैला हमर जननी सुरक्षा योजना को ईयर रे लॉन्च हेतिला एटा हमर 2005 रे लॉन्च हेतिला करेक्ट 2005 yes soda minute ठीक अछि next crude birth rate is defined as the number of live births per 100 population 1000 population 10000 population 1 lakh population crude birth rate कोन कहै जाउची crude birth rate होची it is the number of live births per 1000 populations हैला 1000 populations रो ये रे हमर एटा को करा जाउची एबे आसो नेक्स्ट हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो एमएमआर इज एक्सप्रेस्ड पर एमएमआर इज एक्सप्रेस्ड को ये रे एक्सप्रेशन करा जाउची एमएमआर को 1000 लाइव बर्थ 10000 लाइव बर्थ 1 लाख लाइव बर्थ 1000 पॉपुलेशन एमएमआर जते बडा हमर एक्सप्रेशन होउची सेरा हमर 1 लाख लाइव बर्थ रो रेशियो टा निया जाउची हैला 1 लाख लाइव बर्थ रो एक्सप्रेशन टा निया जाउची नेक्स्ट infant mortality rate is defined as the number of infant deaths below the 1 year per 100 live birth 1000 live birth and 1000 population ba na era to same he gala 1000 population 1000 live birth 1 lakh live birth kon hoy jiba koilo infant mortality rate
infant mortality rate एरा हे जबा हमरो 1000 लाइफ 1000 लाइफ 1000 रो रेशियो रे ही हमरो सब जगह काउंट होए which of the following is considered as the most sensitive indicator of the community health status community health status रो हमर सबुठु माने कोन कहछन सबुठु सेंसिटिव इंडिकेटर कोन सहीटा सबुठु सेंसिटिव इंडिकेटर होची हमर infant mortality rate होची the number of life births per 1000 life ठीक अछि तो एरा हमर infant mortality rate होची सबुठु सेंसिटिव बहुत क्रुशियल बहुत ही अलगा प्रकार से हमर कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस को से मेंटेन करि पाए नेक्स्ट The three components of the epidemiological triad are agent, host, and vector, environment, reservoir, portal of entry. Yes. कौन हला इना? Three components of the epidemiological triad. Epidemiological triad. कौन? 24, 25. Agent, host, and the environment ठीक अछि हां आ population rule और population rule ना कोन कहू नुल्ले oh देखो environment next immunization is an example of which level of prevention primordial prevention primary prevention secondary prevention or tertiary prevention immunization is an example of को level of prevention है ना primary prevention है ना primary prevention अब ये कौन aim करछि it aims to prevent infection before it occurs ठीक then चला next 27 early diagnosis and prompt treatment fall under which level of prevention early diagnosis and prompt treatment fall under which type of immunization it is secondary prevention है ना secondary prevention अब एरा ये कौन aim करछि it aims at identifying diseases in its early stages and treating it properly to prevent further complications को मतलब प्रिवेंट करबो ता संगे आ कोन करबो फर्दर स्प्रेडिंग को मतलब से प्रिवेंट करबो एगो ना secondary prevention next rehabilitation of a disabled person is an example of rehabilitation of a disabled person tertiary prevention है ना ये कौन aim करछि it aims to soften soft करिवो या फिर suppress कर दबो the impact of the ongoing illness or injury that has lasting effects that has lasting है ना next 29 dots used in the treatment of the tuberculosis stands for direct question achi directly absorbed treatment short course directly absorbed treatment short course chalo next question under the national TB elimination program the standard duration of the category treatment is standard duration of the category treatment on 2 months 4 months 6 months 9 months on about standard treatment ta category 1 treatment ta amara 6 months category 1 treatment ta amara 6 months ठीक तापरे जदि हमें देखिबा कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट हला 6 मंथ्स रा
तापरे ता संगे कोन कोन अछि माने तार केतरा टाइप अछि इंटेंसिव होची इंटेंसिव फेज हला 2 मंथ्स रो आउ कंटिन्यूएशन फेज हला आउ 4 मंथ्स रो मिसे के हमर 6 मास रो फेज 6 मास रो ड्यूरेशन था नेक्स्ट आसा क्वेश्चन नंबर 31 John Snow's classic investigation, which laid the foundation of modern epidemiology, was related to an outbreak of. First question ही एरा थिला. कहि दियो जल्दी. कॉलेरा रो आउटब्रेक रो सोर्स तक से डिस्कवर करिकि काढिथिले. सेति में बोली तांको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोली मते कहै छै. 1854 रे से जिनसुदा को से डिस्कवर कॉलेरा. Next, the National Vector-Borne Disease Control Program (NVBDCP) covers all of the following except malaria, filariasis, chalazar, tuberculosis. सबु जिनस हमरो सी हमरो कंट्रोल करूची हैला केवल हमरो कोन कंट्रोल करूनी हमरो ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करूनी ट्यूबरक्लोसिस हमरो के कंट्रोल करची ट्यूबरक्लोसिस इज कंट्रोल्ड बाय NPEP National TB Elimination Program. National TB Elimination Program. Then, ठीक अच्छी TB हमारा अंदर रे जाओ. TB अंदर रे जाओ. Next, as per biomedical waste management rules, human anatomical and infectious waste is collected in a bag or container of the color. को कलर रे हमर ह्यूमन एवडा सब हमर कलेक्ट होची इन्फेक्शियस वेस्ट उडा सब हमर येलो बैग्स रे कलेक्ट होची इन्फेक्शियस वेस्ट उडा सब हमर येलो बैग्स रे कलेक्ट होची जोटा रे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रो माने होची टिश्यूज ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स ए सब जिनस हमर एनाटॉमिकल वेस्ट रे जीवो हला आ इन्फेक्शियस वेस्ट रे कोन जीवो ब्लड स्टेन्ड कॉटन्स dressings syringes है ना एड़ा सब हमारा infectious waste रे जीवो then next as per biomedical waste management rules sharps such as needles and syringes should be disposed of in a container that is a red color cloth bag puncture proof and leak proof made up of ordinary plastic a black colored bin कोथरे कलेक्ट करा जिबा कथा एनाटॉमिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट जोटा कि हमर येलो बैग रे कलेक्ट होची हां शार्प नीडल सिरिंजेस एड़ा सब हमर कोडा रे हमर करिया कथा पंक्चर प्रूफ एंड लीक प्रूफ यस पंक्चर प्रूफ एंड लीक प्रूफ मटेरियल रे तक हमर कवर करी कलेक्ट करी नेकरी जिबा कथा हला नेक्स्ट boiling of water for household purification should be carried out for at least 1 minute 5 to 10 minutes 20 minutes 30 minutes boiling water for household purification घर पई बोली आमे जो प्यूरिफाई करू पानी गरम करू केते समय जाय मिनिमम हमर गोटे रहया कथा किछि केते रेंज रे आमे ताको बॉईल करिया कथा जे प्यूरिफिकेशन हे परिबो इट शुड बी 5 to 10 minutes 5 ରୁ 10 मिनिट जाय पूरा बैक्टीरिया सब पूरा सफा हेबा पई बोली हमर इट शुड बी 5 to 10 minutes next the recommended residual chlorine level in the disinfected drinking water is माने केते की लेवल रे आमे डिसइंफेक्शन करबा पई बोली क्लोरीन छाडी दो वाटर रे हला क्लोरीन छाडी दो वाटर रे तो सेटा हमर केते रेसिड्यू रे रहिले सेटा सेफ हे परिबो केते रेसिड्यू रे रहिले सेफ हे परिबो 0.05 to 0.1 ppm 0.2 to 0.5 ppm 1 to 2 ppm 5 ppm हम रेसिड्यूअल क्लोरीन हमर 0.2 to 0.5 ppm रे रहिले एटा सेफ हला एटा सेफ रिकमेंडेड एटा नेक्स्ट which register is maintained by the ANM to record the antenatal details of the pregnant woman को register टा maintain होचे क्वेश्चन नंबर 37 नारवी जाना पड़ जाउची एंटीनाटल रजिस्टर हला एंटीनाटल रजिस्टर
आउ एएनएम रो माने कोन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ नेक्स्ट एंटीनाटल assistant 38 in community health nursing an eligible couple refers to a couple where the wife's age is between गोटे eligible couple हेबा पई बोली गोटे couple रो एज ता केते हेबा दरकार माने गोटे वाइफ रो एज ता केते भितरे रहइबा दरकार केते भितर रहइबा दरकार गोटे वाइफ रो एज ता रहइबा पई बोली द वाइफ शुड बी फर्टाइल तो फर्टाइल एज ता रहइबा दरकार हैला फर्टाइल एज ता रहइबा कथा आ फर्टाइल एज ता हमरा आरंभ होची कोडू मेनार्क रो आरंभ होची सरुचि मेनोपॉज रे तो मेनार्क रो मेनोपॉज जे से रहे गेला तमरा गोटे कपल रे गोटे वाइफ रो गोटे आइडियल एज हैला इट इज बिटवीन 15 टू 45 15 टू 45 ठीक यस 39 home visiting in community health nursing is considered होम विजिटिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जेतबेले करूचे आमे तो होम विजिटिंग हमर गोटे एटा कोन गोटे कंसीडर करा हुई होम विजिट करी के आमे सब इंफॉर्मेशन गेन करबा एटा गोटे बेसिक टूल फॉर होम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस इट इज अ बेसिक टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस ठीक अछि यस The Village Health Sanitation and Nutrition Committee VHSNC functions at the level of district, block, village or gram panchayat, state. नारू ही जाना पड़ जाउची आंसर कर दियो नारू ही जाना पड़ जाउची विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी ओ लेवल रे काम करछन से यस सी यस विलेज एंड ग्राम पंचायत रे लेवल रे समाने काम करछन विलेज एंड ग्राम पंचायत लेवल रे काम करछन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन 41 the primary role of an anganwadi worker includes primary role of an Anganwadi worker includes conducting institutional deliveries, supplementary nutrition and preschool education, performing minor surgeries, prescribing antibiotics. Antibiotic थोड़ी prescribe करेगी. Performing minor surgeries, Anganwadi worker थोड़ी हमारा minor surgeries कर दो. ठीक. Conducting institutional deliveries सेरा Anganwadi worker का काम नहीं है. Supplementary nutrition and preschool education. Supplementary nutrition जो nutritious food तक की mother पाइन बोली और newly born child पाइन बोली और newly हमारे जो maternal feed पाइन बोली जोड़ा तक है जोड़ा सब आंगनवाड़ी workers मैंने provide करांगी और preschool education provide करांगी छुआ under the family welfare program the copper T IUCD is preferably inserted एटा कौन एटा होची गोटे हमारो intra uterine contraceptive डिवाइस टा कोडी इंसर्ट करा जाउची फीमेल रो यूटेरस रे इंसर्ट करा जाउची हला कोन करूची ये रिलीजेस कॉपर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट releases copper inside the female reproductive tract जा द्वारा कि से कॉपर टा कोन होची जेतबे स्पर्म एंट्री होची it causes the phagocytosis of sperm and phagocytosis sperm ro phagocytosis koruchi and in result of which it suppresses the sperm motility and lowers the sperm fertilizing capacity ठीक हैला डन तो एडा हमरो केते बेले कहूची केते बेले इंसर्ट मार्क किमिति इंसर्ट करा जाउची इट इज प्रेफरेबली इंसर्टेड कोन हबार आंसर only during menstruation on any day irrespective of the cycle in the eligible woman only after 1 year of marriage only in the multiparous women ओ हेले दिन रे यस 42 टा हिजबो ए on any day irrespective of the cycle in the eligible woman
जो वुमेन मान को इंसर्ट करा थिबा को दिन हेले मन से इंसर्ट कर दी पारे ठीक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ता को 43 herd immunity refers to immunity acquired only by an individual through vaccination रे तो हमर एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होची एटा हमर herd immunity तो ग्रुप इम्यूनिटी हबन community resistance to spread of the infection due to high proportion of the immune individuals गोटे पॉपुलेशन रे जदी 1000 टा इंडिविजुअल अछन से भीतर जदी 800 जना वैक्सीनेटेड हे गले ता माने से पूरा पॉपुलेशन टा सेफ हे गला से 200 जना हमर नॉन नेले मते वैक्सीन से माने हमर वैक्सीनेटेड हे गले या फिर से माने हमर प्रोटेक्टेड हे रहि गले बोली हमें कंसीडर करि परिबा तो से केस रे हर्ड इम्यूनिटी हमर एई जगह रे कुहा जिबा कम्युनिटी रेजिस्टेंस पूरा कम्युनिटी रेजिस्ट हो जाउची टू द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन काहेंगे ना मैक्सिमम proportion of the population has already been immune to a particular disorder जोटा कि immunity pass from mother to fetus एटा तो passive immunity जोटा कि हमर passive natural immunity बोली होचे immunity present since birth एटा तो innate immunity एटा कोडे आसिला हमर herd immunity next school health services under the community health nursing program primarily focuses on curative services only periodic health checkup immunization and health education providing scholarships building school infrastructure कौन अब 44 school health services yes 44 B very good periodic health checkup immunization and health education ठीक है 44 टा हला B next the main objective of the integrated disease surveillance program IDSP is to provide curative treatment detect and respond to disease outbreaks early conduct research only replace the national health mission on about 45 it is used to be detect and respond to the disease outbreaks early आउ कोन से एम करची primary goal दा कोन कर the primary goal is to maintain a decentralized state-based surveillance system for epidemic prone diseases. Next, the national health policy that first proposed health and wellness center under the Ayushman Bharat was released. को year release हिची एना हमर 2017 रे release हिची 2017 रे release हिची. Next, health and wellness center under the Ayushman Bharat are being upgraded from district hospital, sub-center and primary health center, community health center only, medical colleges. कौन है जवाब आंसर एटा है जवाब sub-centers and primary health centers. Next, which of the following best describes the primordial prevention हमर को जिंस को डिनोट करूची it denotes the preventing the emergence of the risk factor in a population. Next, in community health nursing a case finding survey is mainly used to identify the undiagnosed cases of a specific disease in the community एटा है जवाब correct answer ठीक एटा है जवाब correct answer. Next, the global goal of the health for all adopted at Alma Ata was originally targeted for the year को year रे एटा को टारगेट करा जायथिला yes 50 है जवाब हमरा 2000 so yes that is it for today. Thank you so much everyone. I hope community health services ऊपर जा सब क्वेश्चन देला कोड बेसिक आईडिया तो मानकर ही जायथिबा फर्दर सेशंस रे हमें आर ऊपर किछि डीप रूटेड क्वेश्चंस मध्ये परिबा तो सेति मैं बोली स्टे ट्यून्ड एवरीवन आ आज रो सेशन केमिति लागिला मते निहात कमेंट सेक्शन रे जाने. Thank you so much. See you next time. Until then, thank you so much. जय जय.